Doing real estate with Nick Mirza makes sense, an expert in real estate investments. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome back to another episode of the Sapphire Show. Today I'm here with the one and only Nick Mirza. Thank you, Zaire. Thank you, everyone listening and watching to us around the world. So what's the topic of the day? So Nick, previously we spoke about the first-time home buyer process and all the steps in it. Now that we're done with that part of it, now we want to move into my favorite part, which is investment. Investment real estate is amazing. I mean, you can make yourself passive income and so much more just by doing a few simple steps. Okay, I mean, if you want to get rich, invest in real estate. Absolutely. 99% जो rich लोग हैं, they have real estate. सब ने real estate में invest किया हुआ है. Or there's been plenty of research and plenty of companies who've done research on this topic that the safest investment you can possibly make is real estate. A fun fact that actually I didn't know up until recently was that a lot of insurance companies, when you pay your insurance, they don't just keep your money in a bank account. They actually invest your money. Well, it becomes their money at that point, but they invest that money into real estate because that's the strongest financial backing that they can have. The strongest and safest. Absolutely. So that being the case, thank you to you guys for giving me some questions as well, and I've come up with some myself for Nick today. So Nick, let's get right into it. Let's get it on. So the very first question that I would like to ask you is investment property क्या होती है? Investment property क्या होती है? Investment property जो है ना बहुत चीज़ों में होती है. उसमें आपकी commercial भी है, residential भी है. अब residential में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. उसमें आपकी multi-family आ जाती है. Multi-family में duplex, fourplex, apartment complex. Commercial के अंदर आपके retail, office, hospitals, hospitality, land, ये सारी चीज़ें आती हैं. Right. So any investment जहाँ से आपकी पैसिव इनकम या एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम आती हो, इधर शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती है. So Nick, अगर मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी लूँ, especially with in today's world के आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई हैं, अगर मैं ऐसी प्रॉपर्टी लूँ जो मुझे इमीडिएटली कैश फ्लो नहीं करके दे रही, मुझे जेब से भी थोड़ा सा डालना पड़ रहा है, is that a good idea for investment in your eyes? और फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा से हम कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देखना होता है तीन चीज़ें. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तीन चीज़ें होती हैं. नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 लोकेशन. तो सबसे पहले तो हम उसकी लोकेशन देखिए जी. अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि आप प्रॉपर्टी कौन सी ले रहे हैं. अगर देखिए आप लैंड अगर ले रहे हैं तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कि लैंड पे आपकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, उसमें आपको मेंटेन भी रखना है, उसके प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है. लेकिन लैंड जो है हमेशा से इन अ लॉन्ग रन आपको अच्छे पैसे दे जाती है, लेकिन एकदम से आपके पैसे फौरन आने शुरू नहीं होते कि आपने लिए इमीडिएटली स्टार्ट जनरेटिंग कैश फ्लो फॉर यू. ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं, लाइक मल्टी टेनेंट फैसिलिटी आपने ले ली, डुप्लेक्स ले लिया, फोरप्लेक्स ले लिया, 8 यूनिट का कोई अपार्टमेंट ले लिया या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, वहाँ से जो है आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है. अब वो इनकम कितनी आ रही है वो आपको नंबर्स देख के उसकी जो है पूरा फाइनेंशियल फीजिबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि उसका कैप रेट कितना है, उसका नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, उसकी लीज कितनी है, वो सारी चीजें जो एक फैक्टर होता है उसमें देखना होता है. Great information. तो अगर आप लोगों को ये जो terms अभी Nick ने कहे नहीं पता, do not worry, we will explain these terms as we go through this series. Next segment में yes. So Nick, that was great information. Now that would bring me into my next question, since we spoke about all the different types of investments, right? How much money do I need to make a real estate investment? बहुत अच्छा सवाल है और काफी लोग इस मामले में कंफ्यूज हैं. अब रियल एस्टेट देखिए ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप मिनिमम 5,000 से भी कर सकते हैं और 5 मिलियन भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग आपका बजट कितना है. जितनी आपकी चादर है उतने आप पाँव फैलाएंगे.
अब वो 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है कि वो क्राउड फंडिंग होती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खरीदती हैं. So you can just buy a small share in there. बहुत सी की जो रिक्वायरमेंट है is about like minimum $5,000. You can invest $5,000 and वो जो आपके हैं is going to be in there for at least minimum 2 to 3 years को hold करेंगे, and they pay you interest every year on that one. Varies anywhere between 8 to 15%. Wow. Yeah. And then after one project is complete and they have an exit strategy, and then उसको फिर करने के बाद you get your money back, plus if there are any dividends or profit sharing that you have agreed with the company, वो आपको मिल जाएगा. That's amazing. So I mean, that just seems like a great way to beat inflation, because yearly inflation is about 6%. So if you're getting 8 to 15, I mean, you're already in the green. Real estate में जो investment में जो return है is always very good. Awesome. So Nick, I mean, we have some properties that are already producing cash flow for our clients. So if you guys are interested, give either one of us a call. Yeah. But moving on to the next question, people always want to know that, you know, should they buy a property under their own name, or should they buy a property under a corporation like a LLC or a S Corp, or, you know, all the different types of corporations? Great question. बहुत ही अच्छा सवाल है. जब आप इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि आपके पर्सनल जो एसेट्स हैं वो प्रोटेक्ट हैं. उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए एक आप अपनी कॉर्पोरेशन बनाएं. उसके लिए आप किसी अच्छे सीपीए से कांटेक्ट करें. सीपीए जो है आपको बताएगा कि आपको एलएलसी चाहिए, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, वो जो भी है वो आपकी सिचुएशन को देख के, आपकी इन्वेस्टमेंट को देख के वो बता देगा. सो द बेस्ट थिंग इज दैट to create or establish a corporation when you start investing in commercial real estate or in any real estate. Awesome. And for our clients who are looking to buy multiple properties, would we recommend them to open a new LLC for every property? We recommend that हर property की जो है आप अलग से LLC खोलें, इसलिए कि अगर आपको God forbid कोई lawsuit होता है जी, तो वो अगर सारी प्रॉपर्टीज एक ही एलएलसी के, एक ही कॉर्पोरेशन के अंडर में है, तो सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर इम्पैक्ट होगा. वर्सेस अगर आपकी एलएलसी में एक ही प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे कुछ हुआ है तो उसकी जो भी लायबिलिटी होगी अप टू दैट वुड कवर एवरीथिंग. दूसरी प्रॉपर्टीज जो आपकी महफूज रहेंगी. Got it. So guys, basically अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, then, you know, open multiple LLCs. But hey, if you want to, I mean, थोड़ा सा खर्चा है इसमें, लोग डरते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इसकी सेविंग और प्रोटेक्शन जो है, you would appreciate that. लेकिन अगर पर्सपेक्टिव में डालें, अगर आप $500,000 की for example प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर उसके ऊपर आप $500 स्पेंड कर रहे हैं to create a new LLC, I think it is that's very worth it, right? Worth it. I mean, if you look at the percents, that's nothing. So that brings me to my last question for today, and that is, what is the best time to make a real estate investment? Real estate investment का हम हमेशा से कहते हैं, and आपको भी पता है इस बारे में, the best time to do or invest in real estate was yesterday. इसलिए कि जो प्रॉपर्टी आज आप देख रहे हैं, कल कोई उसको देख के जा चुका है जी. और जिसने कल देखा हो सकता है वो उस पर ऑफर आज रख रहे हो, तो मे बी इट विल बी टू लेट फॉर यू. तो ऑलवेज जैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आप उसकी फिजिबिलिटी कर लेते हैं, आपके नंबर्स वगैरह सब, आपका जो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का वो उससे मैच होता है, देन डोंट वेट एनी लॉन्गर, जंप इन देयर. अगर आप साइड पे खड़े रहेंगे और फील्ड में जंप नहीं करेंगे तो आप हमेशा तमाशाई बने रहेंगे, प्लेयर कभी नहीं बनेंगे. Absolutely. Sideline से कुछ नहीं होगा. कभी नहीं होता sideline से. A very good person told me this line: time in the market is better than timing the market. Exactly. So thank you to the person who told me that, because that really opened my mind. That makes big sense. Yeah. You know, when you're looking from the outside and you're just analyzing, it may not make as much sense as if you're actually in the market, and doing it yourself. And doing it yourself, because through that you'll gain experience. And whether it's good or bad, it'll teach you something, right? You'll get knowledge out of it, and that's what we. और हमेशा से हम कहते हैं, अगर आप किसी experienced professional के साथ चलेंगे, you'll always be successful. Absolutely.
So that being the case, thank you guys so much for tuning into another episode of our show. Please, if you guys have any questions, leave them in the comments, or you can send them to Nick or me through message, and we will try our best to address them in the future episodes. Thank you so much for being part of our show.